तो लेट्स सी हम मेमोरी पर मूव करते हैं। आज हमारी कोशिश होगी हम ये 5.2 या 5.3 तक तो एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ कैशेस तक हम कवर कर लें, जी कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने तो मेन कॉन्सेप्ट्स बताने हैं, आपने बाद में रीड आउट खुद करना है और नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन होगा तो आपने मेरे से पूछना। जी ओके, सो हम सबसे पहले तो मूव करते हैं। आपको उस इस चीज़ पर मूव करने से पहले, दिस इज माय पेज नंबर, यू नो, इन आर RISC-V प्रोसेसर, मैं ये फॉर रेफरेंस के लिए ये डायग्राम ओपन कर लेता हूँ, बट यू नो कि हाउ दैट एक्चुअल डाटा पाथ लुक्स, राइट। हमने हाँ सिंगल जी स्टेज पाइपलाइन में पढ़ लिया था, ये कुछ उसी तरीके से, बस इसके डायग्राम थोड़ी कलर के फॉर्म में, बट ऑल द सिग्नल्स आर नॉट लेबल्ड हियर, बट यू नो कि ऐसे आपका RISC-V प्रोसेसर दिखता है, राइट। जी तो यू कैन सी कि हमने अगर डेटा को एक्सेस करना है किसी भी, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है हमारे पास? रजिस्टर फाइल, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर फाइल वी कैन स्टोर समथिंग, instead of storing something in the memory we can directly store inside the register file. Is जी that okay? अगर जी मैंने कोई चीज लोड की इंस्ट्रक्शन से मेमोरी के अंदर स्टोर करनी है तो मुझे रजिस्टर से उठा के उसको मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड डाटा विद द हेल्प ऑफ सम address and by storing some data, right? This is the जी data that we are storing. तो यू कैन सी कि आपके पास उधर से एक बार हम स्टोर करेंगे, फिर स्टोर करके हमें एक्नॉलेज रिसीव होगा कि भाई मैंने डाटा स्टोर हो गया। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल परफॉर्म द लोड ऑपरेशन दैट previously I did store operation, next time I will do the load operation from the same address, and it will be a very costly thing because my processor will have to wait unless I retrieve the data from the data memory. जी Okay, but हम्म if I store something in my register file, this is very fast. Okay, but if यस I store and go and fetch something from the memory, this thing is very costly. So the best thing is कि whenever I request the address or whenever I send some address जिससे मैंने डाटा को रीड करके लाना है, ओके, देयर आर टू थिंग्स दैट आर यूज्ड हियर, टेम्पोरल लोकेलिटी एंड स्पेशियल लोकेलिटी। ओके, टेम्पोरल लोकेलिटी मींस कि जो मैं एक बार एड्रेस को या कोई कंटेंट को मेमोरी से लेके आ रहा हूँ ना, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि मैं उसको दोबारा एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट करूँ। ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन दिस कंप्यूटर, अभी मैं अगर ये वाली पिक्चर को खोल रहा हूँ, ये वाली पिक्चर को ओपन किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि मैं इस पिक्चर को इन फ्यूचर में भी ओपन कर रहा हूँ। ओके ओके, हाँ similarly, for example, let's say there are some folders in your computer कि आप उन फोल्डर्स को रेगुलरली ओपन करते हैं, बट कुछ फोल्डर हैं जो पड़े होते हैं, पड़े ही रहते हैं, हम उन्हें ओपन नहीं करते। फॉर एग्जांपल सी फोल्डर के अंदर प्रोग्राम डाटा है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, तो हम उन्हें ओपन नहीं करते, राइट। यस तो टेम्पोरल लोकेलिटी मीन्स कि हमने एक अगर आइटम रिट्रीव किया है, हम उस आइटम को मोस्ट प्रोबेबली दोबारा भी लुकअप कर सकते हैं, ठीक है। जी इंस्टेड ऑफ डूइंग द कंप्लीट following this complete data path we use caches. Okay, जी so cache is in between this data memory, जिसके अंदर क्या करेंगे, हमने जो डाटा एक बार डाटा मेमोरी से फैच करके लाए हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे हम एक कैशेस के अंदर स्टोर कर लेंगे, सो दैट इंस्टेड नेक्स्ट टाइम अगर मैं कोई उस एड्रेस से रीड करना है तो वो मेरी कैशे के अंदर मिल जाए, मुझे फुल डाटा मेमोरी के अंदर जाके रीड करने की जरूरत ना पड़े। जी इज दैट ओके? हाँ जी So after register file, my second thing is caches. So what I can do here, instead of accessing some data directly from the data memory, I can look that data first inside my caches. If I get a hit, it means this is a cache hit. Okay, हम्म हम्म and I will get the data or I will fetch the data from the caches and will store back and will continue, and the processor will continue doing its operation. Okay, so in this ओके way, I can save my time or increase my performance of the processor. Okay. जी So and the next thing is called spatial locality. Spatial locality means whenever I will go to the main memory and access some data, okay, हम्म there is a chance I will access. For example, if I say this is my processor, if this all of these things are stored inside the memory, okay. If हाँ I am getting this data or fetching the data from the memory, there is a chance that I will be
using or fetching this that its other member that are present on the upper address and on the lower address. Did you get that? कि there is also a chance कि इसके ऊपर नीचे वाले addresses के अंदर जो उसके एक space है, जिस space के अंदर वो allocate present है, मैं उसका data भी access कर रहा हूँ. So, जी what does cache do is that instead of just storing this address, it हाँ also store the other corresponding addresses also. Is that okay? जी Have you, इसकी मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास कैशे कैसे वर्क करता है. Have you tried opening some folder in your computer कि जो आपने कभी ओपन ही ना किया हो, उसको ओपन करने में या फोल्डर्स को लोड करने में थोड़ा सारा टाइम लगता है, थोड़ा सारा डिले आपने देखा होगा, बट वो फोल्डर जो आप रेगुलरली ओपन करते हैं वो बहुत जल्दी ओपन हो जाते हैं, हाँ हाँ है ना. हल्का सा हाँ हाँ हल्का हाँ सा हाँ थोड़ा सा आपको डिले महसूस होता होगा. फॉर एग्जांपल कोई किसी हम ऐसे फोल्डर के अंदर जाएं जिसमें बहुत पुराना डाटा पड़ा है, हमने कभी विजिट ही नहीं किया उस प्रोसेसर, थोड़ा सारा ग्लिच होता है लेकिन उसी टाइम लोड हो जाते हैं क्योंकि प्रोसेसर की परफॉर्मेंस ह्यूमन आई के लिए वो निग्लिजिबल और मेनी थोड़ा सारा डिफरेंस होता है. बट बैकएंड पे क्या होता है, वो कैशेस के अंदर नहीं मिलती, प्रोसेसर को मेन मेमोरी से डाटा फैच करना होता है. बट दोज फोल्डर्स दैट वी रेगुलरली विजिट, हमारे लिए वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता और वो मेमोरी एक्सेसेस बहुत फास्ट होती हैं. So I will read this word, then you will see what does this mean. Temporal locality. If an item is referenced, it will tend to be referenced again soon. The same thing. Is that okay? जी तो इसकी एनालॉजी इस तरीके से नॉर्मल आइडियली इसकी एनालॉजी इस तरीके से प्रोवाइड की जाती है कि अगर आपने लाइब्रेरी है, एक आपके पास लाइब्रेरी है, ओके, लाइब्रेरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं. टेम्पोरल लोकेलिटी मीन कि अगर आपने लाइब्रेरी से एक बुक फेच की है, अपने कोई मे बी कोई नॉवल समथिंग, आप प्रॉपर्ली चांस है कि आप वो नॉवल दोबारा पढ़ने के लिए या उसको दोबारा फेच करें. एंड स्पेशल लोकेलिटी मीन्स कि आपने अगर वो नॉवल या बुक अगर लाइब्रेरी से चूज की है तो आप उसके आसपास जो बुक्स पढ़ी हैं, आप पॉसिबल चांसेस हैं कि आप उनको भी यूज कर सकते हैं या इन फ्यूचर यूज करेंगे. सो दिस इज द सेम थिंग. This is mean locality in time. Locality in time means that you will reference this item again in future. ओके गॉट इट Okay, if you recently bought a book to your desk to look at, you will probably need to look it again soon. Okay, this is ओके the same thing. And spatial locality mean this is called spatial in space. If an item is referenced, items whose address are close by will tend to be referenced soon. Is that okay? जी The same thing that I have explained here. You can read this thing also, but for example, when you bought a book on early English computer to find out how to, it this etc, you are also notice there was another bookshelf next to it. The same thing, libraries analogy is provided here. You can go and read this one. Okay, but I have explained the concept. If you have any question, you can ask. Okay, is the ओके both of these are clear, right? यस सर So अरे this is अमर क्लियर हाँ Yeah, okay. So this is the there are actually two type of principles of locality: temporal locality and spatial locality. Okay, and now हाँ you जी know what does this mean. But right now we have not. ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये एक जनरल टर्म में आपको एक्सप्लेन किए जाते हैं. अभी इनको हमने लिंक नहीं किया मेमोरी के साथ. इन फ्यूचर हम करेंगे. देन आई विल गो बैक एंड एक्सप्लेन. हालांकि मैंने बता दिया कि हम कैशेस के अंदर यूज करते हैं, बट कैसे करते हैं अभी हमने उसको नहीं देखा. ओके, अभी सिंपल चीज बात हो रही है. आपको ये भी पता है कि हमारे पास सबसे पहले एक रजिस्टर फाइल होती है, रजिस्टर्स होते हैं, देन हमारे पास कैशेस होती हैं, देन हमारे पास एक मेन मेमोरी होती है, और एक हमारे पास हार्ड डिस्क भी होती है. आपने रैम का नाम सुना हुआ है ना. हाँ जी हाँ जी कंप्यूटर्स के अंदर डिफरेंट रैम्स होती हैं कि आपके कंप्यूटर में कितनी रैम है, किसी ने पूछा होगा मे बी. सो दैट रैम इज एक्चुअली कॉल्ड मेन मेमोरी. ओके, मेन और मेमोरी DRAM you can also call it a DRAM. Sometimes we refer it to main memory, but most probably you will see a DRAM or SRAM. Okay, so I will जी explain. In today's computer it is referred as DRAM. Okay, हाँ I will explain what this D here and what this S here. So आपके पास प्रोसेसर की जो स्पीड होती है वो काफी फास्ट होती है. ओके, आपको मैंने फॉर हाँ एग्जांपल प्रोसेसर का अगर मैं टाइम पीरियड कम कर दूं, ओके, प्रोसेसर की क्लॉक फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड कर दूं, मेरी फ्रीक्वेंसी उतनी इंक्रीज हो जाएगी. सो इफ आई से माय क्लॉक पीरियड क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज 10 gigahertz, it means my processor can execute 10
to raise to the power gigahertz instruction in 1 second. Is that okay? So itni instruction, billions of instruction my processor can execute in 1 second. But if there is some load or store operation, that speed will vary depending upon the accesses. So whenever I will have to go and fetch some data, हमारे पास प्रोसेसर के अंदर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, उसके अंदर कौन से होते हैं? लिमिटेड मेमोरी होती है. क्यों? बिकॉज हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं. ओके. Then the हाँ second thing is whenever we need to perform or store something or load something to the memory, हमारे पास second thing हमारे पास क्या होती है? Caches. This is the fastest thing after my processor. Okay, second highest thing or second fastest thing. So this is called static RAM. Okay, हाँ this is called static RAM. So the caches are actually made up of SRAMs. इसकी हमारे पास कॉस्ट काफी ज्यादा होती है बिकॉज हमारे पास प्रोसेसर के बाद सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? SRAM. This is current technology I'm referring to. Then we have, after this we have a RAM. Okay, that is called dynamic random access memory. This is called static random access memory. This is called dynamic random access memory. Is that okay? डायनामिक एक्सेस में ओके ओके आप एक बार इनको देखें दोबारा से कि आपके पास ये चीज समझ आई है. आपको पास प्रोसेसर के बाद सबसे पहले हमारे पास कौन सी चीज होती है? रैम डायनामिक एक्सेस मेमोरी और स्टैटिक एक्सेस मेमोरी एंड देन उसके बाद कैशे उसके बाद मेन मेमोरी ओके. सो हमारे पास जो स्टैटिक मेमोरी होती है इसके अंदर जो वैल्यू या डेटा जो भी हम स्टोर करते हैं वो उस वक्त तक स्टोर होता है जब तक हम उसको पावर प्रोवाइड करते रहें. यू विल रीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स हियर. ओके, आई विल एक्सप्लेन. स्टैटिक or random access memory is a static memory and retain a value as long as power is supplied. Okay, हाँ and it ओके is faster than DRAM. Okay, and ओके magnetic disk also. Is that okay? ओके And each SRAM, जो हमारे पास SRAM होता है ये comprised of होता है 6 ट्रांजिस्टर. आपने ट्रांजिस्टर का नाम सुना हुआ है? हाँ सीमोस हाँ, हमारे पास एक ट्रांजिस्टर्स होते हैं डिफरेंट. हमारे पास ये जितनी रैम्स होती हैं, हमारे पास एक फ्लिप फ्लॉप का नाम सुना हुआ आपने? फ्लिप हाँ फ्लॉप जी लैचेस. तो हाँ हमारे पास जी जो रजिस्टर्स होते हैं वो हमारे पास मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड फ्लिप फ्लॉप इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग. तो इस वजह से हम वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं हमारे पास प्रोसेस. देन द सेकंड थिंग इज द to store only one bit, how many registers or transistors we need in static RAM? 6 transistors. Okay, but in the DRAM, since this is very costly, why? Because here we are using 6 transistors, and inside the DRAM हमारे पास क्या होता है? एक ट्रांजिस्टर, एक कैपेसिटर. Okay, ओके ओके so you can write these type of things. These are very important, that a static random access memory will retain its value as long as the power is supplied to it. Okay, ओके and SRAM is basically, or static random access memory is comprised of 6 transistors, while DRAM is comprised of or is made up of 1 transistor and 1 capacitor. ओके And one more thing that you can note down is dynamic random access memory. Data is stored in the form of charge. Okay, हाँ because हमारे पास एक ट्रांजिस्टर होता है और एक कैपेसिटर होता है, और कैपेसिटर के अंदर हमारे पास चार्ज होता है. सो द डेटा दैट इज स्टोर्ड इनसाइड दिस डायनामिक एक्सेस मेमोरी is stored in the form of charge. Okay, and हाँ DRAMs are volatile in nature. It means their data can be lost due to the capacitor charge leakage. You must have heard these terms, leakage और data leakage. कैपेसिटर को क्योंकि चार्ज क्या होता है तो एक मैग्नेटिक हमारे पास, मैं अब इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता. यू कैन फर्दर रीड दिस काइंड ऑफ थिंग, बट व्हाट आई एम सेइंग हियर इज दैट आपके पास फास्टेस्ट मेमोरी अभी तक कौन सी है? प्रोसेसर के अंदर जो रजिस्टर्स लगे हैं, दैट इज मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, एंड दैट इज वेरी लिमिटेड एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव. ओके, ओके then the second fastest thing is the static RAM, that is, and all the caches are actually made up of this static random access memory. Okay, you can see here its size is very smallest, but its cost is very high.
So if cost is high, it means its performance is also greater than the other things. Okay. Then the Okay. second thing is dynamic access memory. Dynamic access memory speed is very large, but it is less than the SRAM technology. Okay. Then the last thing is magnetic disk, or you must have in today's technology you must have heard the name NVMe, SSD, or and one more thing that you must have heard, hard disk. Have you heard these names? Yes, I've heard. Okay. The first thing is all of these are in this category, but the name जिस ऑर्डर में मैंने नेम लिया है इनकी स्पीड भी इसी तरीके से वेरी होती है. सबसे फास्टेस्ट हमारे पास NVMe है, then SSD, then hard disk. And right now they are only mentioning magnetic disk, that is hard disk. Okay. Yes. ओके लेट मी शो यू. जैसे कि मेरे कंप्यूटर में मेरे पास अभी हार्ड डिस्क कितनी है, ये स्टोरेज कितनी है, 953 TB. ओके सो दिस इज माय हार्ड डिस्क. Right now I have installed NVMe, but you can refer this is a hard disk. Okay. Yes. And this DRAM is my RAM here that is present inside my this thing. And if I go to these properties, you can also see in your PC also. Currently I have installed 16 GB of RAM. So it means my DRAM right now I have installed is 16 GB, and 16 GB is very large. I will explain why even the 16 GB is enough for a simple processor like this. Okay. Okay. So अब हमने मेमोरी हायरार्की को देखते हैं कि सबसे पहले जो जैसे कभी मैंने थोड़ा ज़रा अब जितना कुछ बताया है ना उसके बारे में हम इसको देखते हैं. अब मैं डायग्राम इस पे मूव करता हूँ. ये मैंने बता दिया, आपने इसको खुद रीड करना है. यू विल सी टू और थ्री थिंग्स कि आपके पास अगर एक फैक्टर को इंक्रीज करूंगा तो मेरे पास दूसरे फैक्टर को मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट a memory that is fastest, its cost will be high. Okay. And Okay. if I want to reduce the cost, the memory will be slower, its speed will be slower. So it's the inverse relation. So the same thing is written here. You can read or go through this all this literature here. Okay. Okay. Then the Okay. next thing is called how the data transfer or how the memory or cache is stored. So I have used a term caches here. Okay. So do you know about anything about caches? Yes. Yep. It is stored for a temporary time, but it is very fast. But it is And very you fast. can. And it is remember I told you कि हमारे पास जो डाटा होता है वो एक डायनामिक स्टैटिक मेम. तो हमारे पास एक ये जो डाटा होता है इसके अंदर 6 ट्रांजिस्टर होते हैं. ये टेक्नोलॉजी काफी फास्ट है. बट आफ्टर प्रोसेसर हमारे पास कैशेस यूज होते हैं. इनसाइड दिस कैशेस वी यूज डिफरेंट टर्म्स. अब मैं इन टर्म्स को बारी बारी एक्सप्लेन करने लगाऊंगा. अगर आपको कहीं पे भी इशू होगा तो आपने मुझे बता देना. ओके. Okay. सबसे पहले हम ब्लॉक्स को पढ़ते हैं. इनसाइड दिस कैशे वी हैव अ ब्लॉक. हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं जैसे ये एक ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है. ओके. Okay. And similarly the other thing is the block or line. You can refer the same thing. Block or line is actually the same thing. So let me show you the minimum unit of information that can either be present in a or one more thing. मैं इसकी definition देखता हूँ exact अगर लिखी हो तो. The minimum unit of information that can be either present or present in the two level hierarchy. हम जो ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की होती है ना कैशेस के, इनको आगे हमारे पास एक्सप्लेन किया होगा कि हमारे पास लेवल 2 कैशेस होती हैं, लेवल 3 कैशेस होती हैं. बट राइट नाउ आई एम रेफरिंग हमारे पास अभी एक सिंपल कैशेस है. ओके. सो हाउ द कैशे स्ट्रक्चर विल लुक लाइक आफ्टर इफ देयर इज अ miss or in the and if the processor is requesting to store something to the memory or load the data from the memory. Okay. Load or store operation, because whenever the processor is requesting load or store operation then the memory is involved, otherwise the memory is not involved. For example, a simple R type instruction, a memory is not involved. Okay. But if it is a load or store instruction, the memory is involved, right? Yes. So we are talking about only the operation that will or the instruction that will involve the memory in it. So after if there is a miss inside the registers, then the after the processor I will go and see the data is present inside the caches or not. And inside the caches we have different blocks and line. I will explain that what is block. Blocks is
हमारे पास जैसे कि मैंने स्पेशल लोकेलिटी का जिक्र किया, हमारे पास जब भी कोई कैशे और डेटा मिस होता है, हम उस डेटा को मेन मेमोरी से उठा के कैशेस के अंदर स्टोर कर देते हैं। इज दैट ओके? ओके सो अब आप एज्यूम करें, अब आपने एक नया प्रोसेसर लिया है, जब फर्स्ट टाइम आपके पास मिस होगा प्रोसेसर से और वो कैशे के अंदर लुकअप करने जाएगा, आपकी कैशेस ब्लैंक होंगी, कैशेस के अंदर कुछ स्टोर नहीं हुआ होगा, राइट? जी। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, अगर आपने रिक्वेस्ट किया तो कैशे से क्या होगा, मिस। वी कॉल दिस एज अ मिस or cache miss. Okay, but ओके if the data is found inside the cache, it is called cache hit. Okay, ओके is that okay? And what हाँ is called miss penalty? Miss penalty means if there is a miss inside the cache, I will have to go to the main memory. Main memory mean DRAM or maybe hard disk. Okay, ओके ओके and then I will need to fetch that data and store and come back to the processor. So the path will be like this. Just look at my cursor. Processor sends some request. There is a miss inside the cache. After cache, it will go to the main memory. Okay. And if the data is also not present in the main memory, it goes to the hard disk. The data is found here. Then it stores it inside the DRAM also. It stores inside in the caches also, and then it goes to the processor. And you can see this complete path will actually stall my processor. Stall means my processor will wait that because it cannot execute that instruction unless the data is given back to the processor. So this ओके thing will cause my processor or my performance of my processor to reduce. Is that okay? यस This is called mispenality. Mispenality is the time required to fetch a block into the level of memory hierarchy from the lower level, including the time to access the block and transmit it from one level to another. Is that okay? ओके Mispenality means that the time that will be taken for the processor to execute some instruction. If there is a miss inside the cache, it has to go to the lower level hierarchy. We will see what are the different levels of hierarchy, but in term, I have explained what is mispenality. And hit time is the time required to access the level of memory hierarchy, including the time need to determine whether the access is a hit or miss. For example, let me show you. If we do some example here, I think it would be easy. हम एक आगे एग्जाम्पल भी आएगी तो हम उसको एग्जाम्पल भी करेंगे। हमारे पास अगर कैशे को हिट हो जाता है तो उसको कहते हैं हिट, कैशे हिट। एंड इफ देयर इज अ मिस, इट इज कॉल्ड कैशे मिस, मिस राइट? पेनल्टी हाँ जी नॉट मिस पेनल्टी। मिस पेनल्टी इज द टाइम दैट विल बी टेकन। अगर हमने टाइम, वो वाला टाइम जो हमें लगेगा प्रोसेसर से मेन मेमोरी तक जाने के लिए और मेन मेमोरी से वापस आने में। और यू कैन सिंपली से टू मूव द डाटा और टू फैच द डाटा फ्रॉम द लोअर लेवल हायरार्की। Okay, that time is called miss penalty time. And hit time is the time कि अगर हमने कोई रिक्वेस्ट किया और अगर हमारे पास कैशे में हिट हो जाती है तो कितना टाइम हमारे पास लगा है कैशे हिट होने में, उस टाइम को कहते हैं हम हिट टाइम। इज दैट ओके? ओके And hit rate and miss rate are actually the same, are the opposites of this thing. For example, I'm giving you a simple example to understand this hit rate and miss rate. Let's say I have 100 memory accesses, okay, from the processor. Okay, हाँ हाँ and inside this 100 uh, requests from the processor, if I say my 20% requests were missed in the cache, ओके okay, then what is my hit rate and what is my miss rate? This is a simple question. 20% 80% Exactly. So my hit rate is 80% because 80% or the 80% my instructions were found inside the, or the memory accesses were found inside the caches. So that is my hit rate. And my, what is my miss rate? Miss rate will be 100 minus what is my hit rate always. Okay. ओके हाँ And one more thing you can simply write here is that hit rate plus miss rate will always be equal to 1. ओके Okay. So if I say my miss rate is 30%, what is my hit rate? प्लीज रिपीट आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई थी मेरा नेट का Yeah. इशू हुआ If I नंबर say क्या था my, yeah, if I say what if my miss rate is 30%, what is my hit rate? 70
Exactly. So you what you can do is that you can just simply subtract it. So 1 minus zero point 0.3, you will get 0.7. So 0.7 multiply with 100, 70%. जी, okay, Okay. जी, So now I have explained all of these things: miss penalty, hit time, miss rate, hit ratio. You can go through the definition, and the block or caches are these are the blocks and caches. I will explain this in the detail when we will do the caches. आपको अभी के लिए थोड़ा ब्लॉक और कैशे लाइन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट आगे हम जब पढ़ेंगे ना कैशेस को तो आगे मजीद अच्छा हो जाएगा उस वक्त. okay, Which of the following memory hierarchy take advantage of temporal locality? You have to do it by yourself. If so, हमारे पास अब मैं कैशेस को थोड़ा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. हमारे पास ये जो सीपीयू है, सीपीयू इज एक्चुअली प्रोसेसर. ओके, okay, the single cycle processor that you seen, and also a 5 stage pipeline processor, that is CPU. So the first thing is called level 1 hierarchy. Level 1, level 2, there are these are the different levels. So the first thing, whenever we send the request, it goes to the caches. So cache is usually referred as a level 1. We will see there are other blocks also. So if there is a miss in the cache, it will move to the second level, then it is moved to the third level, and so on. Okay, कितने levels हैं total? काफी ज्यादा levels है. We will explain. But for now, you can see here. अगर मैंने अभी आपको बताना शुरू किया, but the thing that you need to remember is that कि अब इस ट्राइंगल को अपने जहन में रखना है. ये देखें कि अब आपसे सीपीयू के अंदर काफी लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं, तो बहुत कम मेमोरी हमारे पास, राइट? Then the next thing is called level 1. And inside the level 1, after CPU, the second highest or the most performance memory is level 1. Caching. Caches हाँ, or level 1, you can simply say. And you can see its storage is very limited. This is called the size of memory. This arrow is telling me. Okay. The हाँ, size increased, but my performance is slightly decreased than it was present in the memory register accesses. Then, if there is also a miss inside the level 1, I will go and search the level 2. Okay. एंड हाँ, इनसाइड द लेवल 2 यू कैन सी जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ मेरे पास मेमोरी स्टोरेज काफी ज्यादा हो रही है, बट मेरी परफॉर्मेंस उतनी ही कम हो रही होगी, बिकॉज इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द सीपीयू इन एक्सेसिव टाइम विल रिड्यूस माय सीपीयू परफॉर्मेंस. इज okay, इट ओके? got it. तो ये हाँ जी, डायग्राम आपको समझ आ रही है कि अगर मेरे सीपीयू ने कोई मेमोरी रिक्वेस्ट एक्सेस की है तो डिफरेंट लेवल से उसने होके जाना है. जो टॉप मोस्ट लेवल होगा उसकी मेमोरी काफी कम होगी, बिकॉज स्मॉलेस्ट मेमोरी और द स्मॉलर स्टोरेज हाई परफॉर्मेंस. रिमेंबर दिस डायग्राम जो हमने शुरू में देखी थी. साइज स्मॉलर देन द कॉस्ट इज हाईएस्ट एंड दिस इज द फास्टेस्ट. इज दैट ओके? okay, एंड द लास्ट लेवल इज कॉल्ड स्पीड इज स्लोएस्ट बट size is biggest. Biggest mean the memory storage is biggest and the cost is also lowest. Is that okay? cost. एक question है मेरा. Yep, yep, अ, हम cost को दो तरीके से देखते हैं ना. yep, एक तो प्रोसेसर का टाइम हो गया कि वो कितना कॉस्टली है अगर yep. ज्यादा Here, नीचे here's लेवल the से. cost mean. Yeah, हाँ, exactly. हाँ, What हाँ, there are this cost actually means two things. One thing is called, if we want to increase the performance, the number of all of these things are actually made up of gates, different types of gates. The processor behind the scene, this register file or all the blocks that you are seeing here are in reality these are all made up of gates. Okay. okay, सो अगर मेरे पास कोई ऐसी जितने ज्यादा मैं गेट्स लगाऊंगा, कोस्ट ऑल्सो मीन मेरे पास माइक्रो आर्किटेक्ट विल increase. I will need to fit more gates to store more data and to become more fasting. Okay. So the okay, cost here means the amount of money also, and the second thing is that the memory accesses will increase, of course, but the cost will increase also. Cost means if I say, let me show you, if you have asked this thing, the cost thing will come in this control hazard that is called, there are actually three type of hazard: data hazard, control hazard, and there was one more. Let me see which one is that. Data hazard, control hazard, or just give me a minute. I will look here. आपके पास तीन तरह के हैजर्ड होते हैं पाइपलाइनिंग हैजर्ड्स में. तीन टाइप से मुझे नाम भूल गया. डेटा हैजर्ड, कंट्रोल हैजर्ड, एंड वन मोर थिंग. वेयर इज द थर्ड थिंग?
सो आपके पास एक मैं वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपके पास हैजर्ड ना कितने टाइप के होते हैं। इसमें एक कोस्ट फैक्टर भी आता है। अब हमारे पास एक हैजर्ड्स हैं, पाइपलाइनिंग हैजर्ड्स या स्ट्रक्चरल हैजर्ड। ओके, दिस नाम मुझे भूल गया था बट मुझे पता है कि ये होता क्या है। सो स्ट्रक्चरल हैजर्ड, व्हेन आई विल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल हैजर्ड आई विल आल्सो एक्सप्लेन द कोस्ट थिंग। ओके, Okay. बट अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि स्ट्रक्चरल हैजर्ड के अंदर क्या होता है। आपको ये तब याद भी रखना है जब हम पढ़ रहे होंगे, तो मैं आपसे ये दोबारा पूछूंगा व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रक्चरल हैजर्ड। ओके, Okay. सो स्ट्रक्चरल हैजर्ड मींस कि अगर आपके पास, देखिए मेरे पास ये भी मेमोरी है, ये भी मेमोरी है, इंस्ट्रक्शन मेमोरी भी है, डाटा मेमोरी भी है, राइट? Okay. हाँ. So instead of using two different memories, I can use a simple memory, single memory that can store both instructions and perform my data accesses also. I can do that, right? हाँ. But in future आप देखेंगे हमने ये दो different memories को use की है to avoid this type of hazard that is called structural hazard. Okay? To avoid this, हमारे पास एक separate memory है instruction memory and a separate memory for data accesses, data memory. Is that okay? Okay. So this is called my cost is increased if I resolve some hazard. This is my cost factor. Okay. Cost factor mean I have to introduce some other block in my processor. Okay. Is that okay? Similarly, the same thing is with the pipeline processor. You know that this is my single cycle processor. But if I want to improve my performance, I move from single cycle to 5-stage pipeline processor. Of course, in the 5-stage pipeline processor, my performance will increase, right? But the cost will increase also. The cost mean I will have to add other blocks also. Is that okay? Hmm. So let me show you कि आपके पास pipeline क्या processor कैसे दिखता है. Pipelining processor, I think I saw the diagram here. Pipelining summary, let me see. हम जब ये देखेंगे तो मैंने एक आगे डायग्राम में से देखी थी यहाँ पे. या दिस इज यू कैन यू सी दिस वन? हाँ. दिस इज Single एक्चुअली cycle processor. दिस इज नॉट अ सिंगल साइकिल बट राइट नाउ दिस इज अ 5-स्टेज पाइपलाइन प्रोसेसर. अभी हमने ये देखा नहीं है बट आपको काफी चीजें ऐसी नजर आ रही होंगी जो सिंगल साइकिल में आपने देखी थी. जी. Okay, जी. like register, ALU, data memory, but you can also see this register, this block, this block where my cursor is. These are the extra things. Similarly, hazard unit. These are the extra or the advanced feature that we are adding to our existing single cycle processor to increase its performance. But if I increase my performance, the cost is also increased. It means I have to introduce new blocks to do some new features. Okay. जी. And behind the scene I am also increasing the number of gates, so it means my cost is also increased. So that is the same thing here. Is that okay now? हाँ जी. Okay, so now you know what does this cost mean. So अगर आप जितना level में highest level means, what does this highest level mean? Can you tell me? In term of memory accesses, cost will be high or low? The cost will be low. No. In the highest level the cost is high but the storage is very low. The same thing, Oh. remember these things. The relationship is like this. The highest level after my processor, my highest level is memory, that is called SRAM, then DRAM, and then magnetic disk. Here comes the NVMe, SSD, and hard disk. Okay, but Okay. now you can see after my processor, the second level is SRAM, and inside the SRAM, the size is smallest compared to the other levels. Okay, Okay. हाँ. but but the cost is highest Okay. compared to the other level, but the memory size and the speed is also fastest because the cost is highest. Okay, so speed and cost has a direct relation. Okay, Okay. Okay. So higher the speed, higher the cost. exactly, because if you want to improve the performance, the number of gates or the number of blocks that you need to add will also increase, but the size will decrease because it's not a, अगर वो ऐसी कोई चीज बना दें तो आपके पास प्रोसेसर इतना महंगा हो के कोई बाय ना करे. दिस कोस्ट मीन ऑल्सो
in terms of money also. Okay, is that okay? Okay, got it. I will remember this. Okay. So if you want, if you go to the market and look for the SRAM, that or SRAMs are not usually for sale. These are present inside the processor thing. But if you go instead of looking for the main memory, अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर दूं, अगर आप अपने किसी मार्केट में जाएं और रैम को बाय करना चाहें तो रैम विल बी मच कॉस्टली कंपेयर टू द SSD और सम अदर थिंग हार्ड डिस्क. ओके, हाँ. फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट नो कि अगर आपने एक यूएसबी बाई करनी है 4 GB की या 16 GB की, तो वो आपको काफ़ी इजीली और चीप प्राइस में अवेलेबल होगी. बट अगर वही आप 16 GB की रैम बाई करने जाए तो दैट विल बी कॉस्टली. इज दैट ओके? Yes, got it. Okay. So the same thing is here. In the lower level, the size of memory will increase, of course, and it will be slower. Why slower? Because the CPU will have to go from all of these level and then come at this level, and after this level, it has also go to the back. So the penalty time will increase. Okay. Now I am using some words. अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो बता दें कि मैं वो वर्ड्स यूज कर रहा हूँ जो अभी हमने पढ़ ली है. इज दैट ओके? Why this is slowest? Because my CPU penalty time will increase. So if penalty time is increased, it is also slower. Okay. So you can simply by looking at this diagram or imagine this diagram in your mind कि अगर आपने CPU से कुछ रिक्वेस्ट बाय करनी है, अगर जो आपके पास सबसे करीब लेवल है, अगर आपको उसी में डाटा मिल जाए तो आप उसी टाइम वापस CPU को प्रोवाइड कर देंगे और आपके पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी एंड दैट इज फास्टेस्ट. बट इफ देयर इज अ मिस, देयर इज अ मिस, देयर इज अ मिस एंड एट द लास्ट लेवल यू गेट अ डाटा, then this is a costly thing. Okay. Costly in term of instruction time, not in the other way around. Okay. That clarifies it. Yes, got it. Then you can see here they have also, yeah, the same thing, the number of GBs they have mentioned कि अगर आपको SRAM बाई करनी चाहिए, इसका टाइम पीरियड कंप्यूटर, मैंने बताया था ना आपको कि कंप्यूटर यूजुअली टेक्स अराउंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी जितनी होगी हमारे पास उतना टाइम लगता है एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में, राइट? हाँ. But if there is a miss in the SRAM, my delay time is how much delay time or to access something from the SRAM? 0.5 to 2.5 nanosecond. जी. थोड़ा सा टाइम इंक्रीज हुआ है 1 नैनोसेकंड से. और इफ माई assume my speed frequency is 0.5 nanosecond, okay, clock frequency, then my starting from 0.5 it will take around 2.5 nanosecond. It's bearable. Okay. It's bearable if there is a hit in cache. But if there is a miss inside the caches, it goes to the main memory that is called DRAM. You can see the number of penalty time. This is called penalty time also. Okay. Okay. For the access time, the access time is increased, but my cost is also decreased Okay. comparative to this. And similarly, flash drive or semiconductor device or magnetic disc, you can see the delays. The delay is huge. So it means if in if you say कि अगर आपको CPU से हार्ड डिस्क तक जाना पड़ रहा है तो दैट इज वेरी कॉस्टली थिंग. कॉस्टली इन टर्म ऑफ टाइम बिकॉज आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा एंड यू कैन सी द डिले टाइम. दिस इज एक्चुअली अ डिले. Is that okay? And the cost जी. is very low in terms of GBs. But in today's era, I think this price is furtherly reduced. आपको 1 GB हार्ड डिस्क या 1 GB USB काफी सस्ते में मिल जाती है. Is that हाँ okay? जी. जी. So आपने देख रहे हैं कि अगर आप जितनी प्रोसेसर से दूर जा रहे हैं आपको एक्सेस टाइम उतना इंक्रीज हो रहा है. एक्सेस टाइम इंक्रीज मीन्स पेनल्टी टाइम इंक्रीज and the जी. processor will be slower. So we have to do something कि हमारे प्रोसेसर को कभी ये मैग्नेटिक या हार्ड डिस्क तक अभी आने की जरूरत ही ना पड़े. जी. यस, राइट. Yes, yes, क्योंकि अगर correct. अगर उसको मेमोरी एक्सेसेस इतनी देर से मिल रही होंगी तो हमारा प्रोसेसर ही इंस्ट्रक्शन को बहुत देर बाद एग्जीक्यूट करेगा और एंड वी विल सी कि हमारा प्रोसेसर या कंप्यूटर हैंग हो रहा होगा बार बार. हाँ जी. ओके. बहुत होता है. हाँ जी. हाँ, सही द बात. सेम थिंग इज हियर कि अगर आपके पास मेमोरी एक्सेसेस कैशेस के अंदर नहीं मिल रही तो आपका कंप्यूटर थोड़ा सा हैंग होता रहेगा. तो द सेम थिंग इज हियर. नाउ वी विल सी द अदर थिंग, द SRAM टेक्नोलॉजी
You can read this. I think I have already explained what is called SRAM, and मैंने ये भी बता दिया कि ये कितने ट्रांजिस्टर से बने होते हैं. 6 ट्रांजिस्टर है, बट राइट नाउ दे हैव रिटन 6 to 8. So you can refer to this thing, okay? Okay. And what did I said for dynamic random access memory? How many transistor or capacitors are there? One उसमें नहीं transistor था. and one capacitor. One, Have you wrote हाँ. down? Yes, तो one ये चीजें transistor. थोड़ी ना रोड लिख भी लें तो बेहतर है, और ये याद भी होनी चाहिए. इस तरह की ये काफी इंपॉर्टेंट Six. चीजें हैं. एंड सिंस जी दिस जी, इज वो मेड लिख अप रही ऑफ हूँ. 6 to 8 transistor, so this is fastest, and that is why it is costly. You can see 6 to 8 transistor per bit. पर bit. Per bit means just to store this information, that is 0 or 1. How many transistors are there? 6 to 8. So now you can get an idea. Is that okay? Yes. So if I Yes. say, let me write, if I write it like this, 0x 100 fail. This is a 32-bit number, hexadecimal number. Yes. Okay. So just to store this thing, how many transistors are required in SRAM? 32 into 6. Exactly. So 32 bit into 6. So you can see कि आपके पास, अगर मेरे पास, that is why my SRAM जो होती है हमारे पास वो काफ़ी छोटी होती हैं साइज में, क्योंकि हमारे पास number of transistors that are required to store are very greater compared to the other levels. Is that okay? Okay. सो अब आपको आइडिया तो हो रहा है ना कि मैं हम सब पढ़ कर रहे हैं और आपको समझ भी आ रही है कि ये क्यों क्यों इसका साइज कम किया जाता है. बिकॉज दिस इज वेरी कॉस्टली. Just to जी store 1 bit of data, how many transistors are needed? 6 to 8 transistors. जी Okay. And in the जी. DRAM technology, हमारे पास number of transistors भी कम use हो रहे हैं. That is why its size is also increased, and it is less costly compared to the SRAM technology. But what is the drawback? The drawback is हमारे पास access time increase हो जाएगा. Got it? Got it. Got it. Okay, now you can see, and one more thing that I explained earlier कि DRAM के अंदर डाटा किस तरीके से चार्ज स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज. बिकॉज हमारे पास कैपेसिटर यूज होता है, एंड कैपेसिटर के अंदर चार्ज होता है. कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो 1 हो जाएगा. कैपेसिटर को लीक कर दिया, नहीं तो डाटा को उसको डिस्चार्ज कर दिया, तो हमारे पास कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, तो हमारे पास वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा 0 को. इफ कैपेसिटर इज चार्ज देन इट इज 1. ओके. Got it. Okay. And I think the same thing is written here. Value kept inside the cell is stored as a charge in the capacitor. Okay. Okay. Now instead of this thing, I think we will explain, or you can go through this diagram again and you will see this. मुझे नहीं लगता इसको मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं देख लेता हूँ कि इसमें क्या कह रहे हैं. Column read right. Yeah, I think that this will be covered in the upcoming slide. The statement. So these are all the different table. I think this is also readable. You can easily see कि आपको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है. Is that okay? Okay. So this is the क्या access ये time. मेमोराइज करना पड़ेगा मुझे? No, 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 no. इसमें कुछ चीज मेमोराइज नहीं करनी. No need to remember this thing. क्या अगर आपको आपने ऐसा कुछ नहीं मेमोर नहीं करना कि 1980 में क्या हो रहा था या 1980 में 16.4 की कितना डिले था. नो. All of this data, whenever some question will come in the exam, the table or the data will be provided to you. Okay. The most important thing that you need to remember is that if you move lower in the hierarchy, the access time will increase. Okay. जी. But the storage will also increase. Okay. Got it. And it Okay. will be less costly compared to the upper hierarchies. Okay. Okay. मेरे ख्याल से इधर यहाँ पे एग्जांपल्स भी होनी चाहिए थी. एग्जांपल्स होते तो हम उसको एक बार एग्जांपल से गो थ्रू भी कर लेते. बट इस बुक में मुझे नहीं लगता कि एग्जांपल दी गई हैं. यहाँ इन एक्सरसाइज यू विल सी सम क्वेश्चन कि आपको एक्सेस टाइम दिया गया होगा. जब हम कैशेस पढ़ेंगे ना, तो आप यू विल सी देयर विल बी सम एग्जांपल दैट विल बी गिवन टू अस, एंड वी विल बी यूजिंग दिस एक्सेस टाइम. जी. एक सिंपल एग्जांपल तो मैंने जैसे आपको सामने पहले ही बता दी. आपको हिट रेट दिया हो, आपको मिस रेट कैलकुलेट करना है, इजी. ओके. सो दिस हाँ टाइप ऑफ जी. क्वेश्चन कैन कम कि अगर आपका हिट रेट इतना है तो आपका मिस रेट क्या होगा. आपकी 20% कैशेस हिट हो रही हैं,
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका हिट रेट कितना है, 20। Okay, जी these type of questions can come, but there is no need to remember this delays also, this thing that we have written here, seen here also. आपको ये चीज बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि इसका डिले कितना था, but you can remember these delays. Okay, this ओके delay just to, but there is no need to even remember these delay, but you can just see कि आपको आइडिया ओके देखें कितना कम टाइम लग रहा है यहाँ पे, फिर कितना ज्यादा हो रहा है टाइम. ओके, हाँ हाँ but there is ओके no need to remember the cost. जी So then I will move to the flash memory. Flash memory is similar to the. I think you can easily read it. This is just like a DRAM. So you can go through this. Then this is a disk memory. Disk memory is the memory that is. हम अभी आजकल के दौर में ना ये disk memory use नहीं करते. This is discarded. You must have seen a hard disk. अब जब छोटे होते थे तो हमारे पास एक प्रोसेसर होता था, हम उसमें बटन दबाते थे, एक सीडी के लिए ओपन सीडी रोम ओपन होता था, हम उसमें सीडी इंसर्ट करते थे एंड देन वी प्ले सम गेम और वॉच मूवीज, राइट. हाँ ये डिस्क मेमोरी बेसिकली वो चीज ही है. हमारे पास एक हार्ड डिस्क भी होती है इसी तरीके से. तो दैट इज द सेम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी. आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी दी गई है, आपने इनको खुद ही रीड आउट कर लेना. दिस दिस इज वेरी इजी, बट आई थिंक देर इज नो नीड टू रिमेंबर एनीथिंग फ्रॉम हेयर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर इज कैशेस एंड वर्चुअल मेमोरी. ओके, ओके आप इनको अपने आइडिया के लिए और समझने के लिए बिल्कुल अंडरस्टैंड करें कि ये क्या होता है. इसमें आपको बताया गया होगा कि डाटा किस तरीके से हार्ड डिस्क में स्टोर होता है. एक हाँ मैग्नेटिक डिस्क होती है, वो मैग्नेटिक डिस्क रोटेट करती है काफ़ी तेज स्पीड में. तो जहाँ पे वन जो, ये काफ़ी डिटेल में इस पे आप कंप्लीट, आई विल रिकमेंड कि आप इसमें अगर यूट्यूब पे जाएं जी और हाउ द हार्ड डिस्क इज एक्चुअली वर्क. एक मेरे ख्याल से हार्ड डिस्क इन कंप्यूटर, आई थिंक there was a video animation. I must have seen the videos. Yeah, this one. This is a very important thing. You can just, for your idea, you can go to this branch education. Okay, हाँ जी आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर के अंदर उसके एनिमेशन किया. ओके, दिस इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो. आई वुड हाँ, डेफिनेटली रिकमेंड कि आप लेक्चर के बाद बस जाके हार्ड डिस्क या फिर ये डी रैम को ही देखें कि डी रैम के अंदर होता क्या है आजकल के दौर में. ओके दिस इज 2 years अगो. ये टेक्नोलॉजी जिस पे बनाई गई है वीडियोस, ये 2 years अगो की है, बट दिस इज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव. आई वुड ओके डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इसको जरूर देखें. ओके, ओके चैनल ओके का नाम है एंड इफ यू विल सी, आपको इसमें कंप्लीट एनिमेशन के जरिए बताया गया होगा. आपको इन दिस इन दिस टाइप ऑफ वीडियोस आपको कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर लेवल पे बताया गया होगा कि इसके अंदर कितने ट्रांजिस्टर लगे हैं, इतने कैपेसिटर. देन यू विल जस्ट इमेजिन कि आपने एक जो छोटी सी रैम होती है, इसमें कितने नैनोमीटर लेवल पे क्या क्या इंसानों ने बना दी है. दिस इज अ वेरी, यू विल बी शॉक टू सी दिस वीडियो इवन. ओके ओके ओके, श्योर हाँ okay, then this is a definition. There is no need to remember, but you can, I think, मैं होता तो मैं इसको भी याद रखने की मुझे ज़रूरत नहीं थी. But since you have a quiz, you can remember this formula by reading at this hard disk, because ये जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी पुरानी हो गई है. मुझे नहीं लगता कि ये इतनी इंपॉर्टेंट है आजकल के लिए. द मेन थिंग इज कॉल्ड कैशेस. हम इस पे मूव करते हैं. ओके, ओके आपको मेमोरी की हायरार्की समझ आ गई है ना. जी अब इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, बिकॉज आफ्टर मेमोरी हायरार्की द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कैशेस. अब आज की लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम कैशेस का इंट्रोडक्शन और थोड़ी सी हम डिटेल में देख लेंगे कैशेस होता क्या है. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर हम एक डिटेल लेक्चर के अंदर देखेंगे कि कैशेस के अंदर डाटा को कैसे स्टोर किया जाता है. ओके, जी हाउ टू सोल्व डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स. ये तो मैं आपको अभी लिख के बता रहा हूँ कि एक न्यूमेरिकल और मे बी वन क्वेश्चन फ्रॉम द कैशेस, ये तो फाइनल एग्जाम का हिस्सा होता है. सिमिलरली वन क्वेश्चन एटलीस्ट, आई एम सेइंग it can be more than one, but at least one question in the final exam will be from the caches and one question will be from the virtual memory. ओके This is, I have not seen any final exam in computer architecture course जिनके अंदर ये क्वेश्चन ना इंक्लूड हुए हो.
कि क्वेश्चन तो लाजमी इंक्लूड होते हैं। आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, आपको इसमें बताया जाएगा इसमें कैशेस का साइज कितना होगा, ब्लॉक साइज कितना होगा, नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, कैशेस का साइज, डाटा को टैग बिट्स क्या होती हैं, एंड सिमिलरली अदर थिंग्स वी हम्म विल सी हियर। सो बट द मेन थिंग इज दैट काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसमें से 2 क्वेश्चन तो पक्के ही पक्के हैं। इज दैट जी ओके? जी तो हम कैशेस को समझने के लिए मेरे ख्याल से मैं आज के लिए, कैशेस की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं, आज के लिए मैं जो बताऊंगा इंट्रोडक्शन के लिए वो मैं बताऊंगा डायरेक्ट मैप कैशेस। ओके, ओके देयर ओके आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैशेस, but in today's lecture what we will be doing is that learning only one type of cache, that is called direct map caches. ओके And what is meant by direct map cache? Each memory location is mapped to exactly one location in the cache. It means कि हमने एक मेमोरी की लोकेशन को डायरेक्टली मैप किया होगा कैशेस की लोकेशन पे। तो ये ओके कैसे करेंगे हम अभी देखते हैं, ये कुछ डायग्राम हम इन पे बाद में आएंगे। मैं रिकमेंड करूंगा, आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा डायरेक्ट मैप का, बट आप इसको थोड़ा सा रीड आउट करके आना कल, एटलीस्ट डायरेक्ट ओके मैप कैशेस को, सो दैट जी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकें। जी लेट मी सी, अब आपके पास ये मेमोरी है। कैशेस का मेन पर्पस क्या है? कैशेस का मेन पर्पस है कि प्रोसेसर को इंस्टेड ऑफ डाटा मेमोरी और हार्ड डिस्क के पास जाने से पहले पहले कैशेस के अंदर हिट हो जाए। ओके, तो ओके वी नीड टू हैव सम प्रिंसिपल्स हियर और सम मेथड्स जिसकी मदद से हम डाटा मेमोरी के कुछ कंटेंट को कैशेस के अंदर स्टोर कर सकें। इज दैट ओके? जी सो इट मीन्स कि ये हमारे पास मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी का साइज काफी बड़ा है एज यूजुअल, यू कैन सी हियर। इज दैट ओके? हाँ जी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंडिंग एट सम रैंडम दिस नंबर, कैन कैलकुलेट कि ये नंबर क्या होता है। एंड कैशे का साइज कंपैरेटिव टू मेन मेमोरी बहुत कम होता है, राइट? हाँ जी बहुत कम एंड यू नो दैट, सो यू कैन सी हियर हमारे पास कितनी कैशेस ब्लॉक्स हैं? 8 ब्लॉक्स हैं। इज दैट ओके? यस हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर? 8 ब्लॉक्स ऑफ कैशेस आर देयर। एंड डाटा आपके पास कितना है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा है। अब आपने इसमें कैसे मैप करना है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, मेरे ख्याल से कल कर लेते हैं,